Assalamu alaikum. My name is Mohammad Tufail Sheikh. So today we will be teaching you about the tips and tricks for getting the better affiliate marketing content. So basically हमारी जैसे पहले एपिसोड के अंदर आपको मैमनून ने कंटेंट के बारे में और कंटेंट राइटिंग के बारे में टिप्स और ट्रिक्स बताए थे, इसी तरह अब हम आपको बेहतर affiliate content marketing के बारे में बताएंगे कि जिस तरह आप बेटर रैंकिंग की तरफ जा सकते हैं और बेटर कंटेंट क्रिएशन की तरफ जा सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. सो बेसिकली देयर आर 4 बेसिक स्टेप्स to write content affiliate marketing. That would be your research and development. The R&D step is very much important to get the things done, to get your product about how is it working, how it operates, how its functionality works for you. और डिफरेंट प्रोडक्ट्स की डिफरेंट नीशेस होती हैं जिनको आपको केटर करना होता है, वो आपकी प्रॉपर R&D और प्रॉपर उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ आपको आंसर मिलते हैं. सेकेंड स्टेप इज फॉर द बेटर कंटेंट राइटिंग शुड बी ट्राई टू यूजिंग अ प्रॉपर फॉर्मेट फॉर राइटिंग. सो बेसिकली ये वही सिंपल स्टेप है जो कि आप पेंसिल और पेन से स्टार्ट करते हैं. ट्राई राइटिंग अ प्रॉपर फॉर्मेट फॉर इट. स्केलेटल स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसके बाद आप अपने कंटेंट को उसके हिसाब से प्रॉपर फॉर्मेट के थ्रू लिख सकते हैं. थर्ड स्टेप शुड बी गेट टू नो योर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन. प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन के अंदर आ जाती है जिसके अंदर उसकी, जैसे मैंने बताया, उसकी ऑप्टिमम फंक्शनैलिटीज, प्रोज एंड कॉन्स, फिर उसके कंक्लूसिव एविडेंसेस जो होते हैं, जो आप बोल रहे हैं वो आपके होने भी चाहिए, क्योंकि बेसिकली व्हाट यू आर क्लेमिंग देयर शुड बी दैट विद इन द प्रोडक्ट एज वेल. एंड लास्ट बट नॉट सर्टेनली नॉट द लीस्ट शुड बी दैट वैल्यू ड्रिवन प्रोडक्ट. बेसिकली जो भी आप चीज लिख रहे हैं, आपके पास कस्टमर और ट्रैफिक कब आएगी? तब आएगी जब आपके कंटेंट के अंदर वैल्यू होगी. इफ देयर इज वैल्यू इन योर कंटेंट, द ट्रैफिक वुड बी देयर. So these were the 4 basic tips and tricks of writing the affiliate content for your affiliate content marketing. So let's start with the basic steps which you need to follow for the script for affiliate content writing. First and foremost step should be the main thought and driving force behind the product development from the manufacturer's side. इसके अंदर बेसिकली जो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट है उसके लिए आपको हिस्ट्री, और ये हमारा फर्स्ट स्टेप से जाके लिंक करता है कि R&D आपने कैसे की थी, आपने इसके स्टेप्स कहाँ से लिखे थे, और इसकी मैन्युफैक्चर की प्रॉपर हिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए कि द मेन थॉट एंड द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द डिजाइन ऑफ दैट प्रोडक्ट. लेट्स गो टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दैट content script, that is comparison charts. Comparison charts with other competitor product which will provide a vivid understanding of the product and the rating of the product. जैसे जैसे आप अपने प्रोडक्ट के अंदर उसकी प्रॉपर रिसर्च करेंगे, आपको उसके कंपैरिजन चार्ट्स, उसके कंटेंडर्स और उसके जो मार्केट के अंदर कंपेटिटर्स हैं उनके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि मेरे प्रोडक्ट के अंदर मेरा प्रोडक्ट कहाँ स्टैंड करता है और मेरे प्रोडक्ट के कौन से प्रोज एंड कॉन्स हैं जो कि मेरे प्रोडक्ट को डिस्टिंग्विश करते हैं मार्केट में. द थर्ड स्टेप इज एक्सपर्ट अथॉरिटेटिव ओपिनियन एंड लिस्टिंग ऑफ द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट व्हिच देन गेट एक्सप्लेन्ड एक्सटेंसिवली फॉर द रीडर्स. क्यों एक बंदा आपके कंटेंट को लेके, आपके कंटेंट से लीड लेके और चीजों की तरफ, बाय की तरफ जाएगा? वो आपसे एक्सपर्ट ओपिनियन की एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हुए हैं, एंड यू आर द एक्सपर्ट बिकॉज यू राइटिंग एफिलिएट कंटेंट मार्केटर. सो बेसिकली उसके बाद आपको फिर प्रोडक्ट परफॉर्मेंस बेस्ड एनालिसिस यूजिंग डिफरेंट सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशंस. आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में टेस्टिंग की होगी, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के अंदर उसकी ऑप्टिमम फंक्शनैलिटी पता करवाई होगी, ताकि आप अपने रीडर्स को एक प्रॉपर परफेक्ट गाइड दे सकें टू गो फॉर दैट प्रोडक्ट और नॉट. So now we have the accurate price and deals available in the content of the product.
आपके कंटेंट के अंदर आपकी कंटेंट की क्वालिटी और वैल्यू तब इंक्रीज हो जाती है जब आपकी प्राइसेस और डील्स प्रॉपर फॉर्मेट के साथ हो और प्रॉपर डिटेल्स के साथ हो और प्रॉपर एक्यूरेट डिटेल्स. This line is very important for you guys because for example, if we mention $1,000 gaming laptop, it doesn't mean that when I press that link it should be $1,200. $200 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि आपके पास एक्यूरेट प्राइसिंग डिटेल्स आपने अपने कंटेंट के अंदर नहीं डाली हुई. दैट इज अ वेरी बिग लैग फॉर यू एज अ कंटेंट मार्केटर. Any updates from the manufacturer side in the previous generation of the product which elaborate the upgrades now possible in the performance department should be accepted in your content. आपके कंटेंट को रेगुलर अपडेट्स बहुत ज़रूरी हैं ताकि वो एक प्रॉपर वैल्यू ड्रिवन प्रोडक्ट आपके साथ आ सके. अगर आपका कंटेंट अपडेटेड नहीं है, यू विल बी लैगिंग इन दैट पार्ट ऑफ योर कंटेंट और traffic would be disturbed and your content will not be ranked as top as well. So let's conclude this proper guide for you guys by authoritative buying guide when discussing multiple products. Obviously, when you are affiliate content marketer, you will be discussing a lot of products as well. सो बेसिकली अथॉरिटेटिव आपकी क्या कहते हैं जो आपका कंटेंट होगा वो ज़्यादा ज़रूरी है कि ताकि आपके रीडर्स को एक अथॉरिटेटिव बाइंग गाइड मिल जाए आपकी तरफ से, ताकि आप लोग उसको प्रॉपरली एक बाइंग की तरफ उसको लेके जा सकें, ताकि वो प्रॉपर चैनल के थ्रू एक जो भी वेबसाइट है जिससे बाय करवा रहे हैं, जिससे आप एफिलिएटेड है, उसकी तरफ जा सके. Conclusion from your side is very much important for the customers and for the readers who are actually spending their time of valuable importance to your reading material, and your expert opinion should add another flavor to that product, और product की description और product के conclusion के अंदर रेलेवेंसी जरूर होनी चाहिए जिसकी वजह से आप एक प्रॉपर फाइनल वर्डिक्ट दे सकें उस रिगार्डिंग द प्रोडक्ट. सो दिस वाज आवर बेसिकली पॉइंट्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ affiliate content marketing. So I hope that you like it. Please like and share this video.